अगर आपसे हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस हो गए हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं, आपको जाना है अपने YouTube ऐप पर और सर्च बार में रेडियो उड़ान टाइप करके हमें सब्सक्राइब करना है हमारे और अधिक इंफोटेनमेंट से भरे वीडियोस के लिए, और सुनते रहना है ऐसे ही रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। रविवार का दिन है, नया शो, नए मेहमान आपसे मुलाकात करवाएंगे। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। ये एस्थेसिस फाउंडेशन से हैं। ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कोर्सेज रन करते हैं। बहुत ही क्वालिटेटिव कोर्सेज हैं, उसके बारे में हम डिटेल्ड बात करेंगे। तो खास मेहमान हैं एस्थेसिस फाउंडेशन से। हमारे साथ को फाउंडर एंड डायरेक्टर रीटा रेगो जी हैं और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड को फाउंडर उर्वी जंगम जी हैं। आप दोनों का रेडियो उड़ान पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू दानिश, और रेडियो उड़ान सुनने वालों को हमारा नमस्कार। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। रीटा जी, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं रीटा रेगो, को फाउंडर और डायरेक्टर हूँ एस्थेसिस फाउंडेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड की। हमने ये फाउंडेशन 1 साल हो गया इस्टेब्लिश होके। हम सर्टिफाइड है, रजिस्टर्ड फाउंडेशन है। हमारे पास जो भी एनजीओ के लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए वो सब हमारे पास है। होने से पहले हम लोग ने प्लानिंग की थी कि कैसे हम लोग ये सेटअप करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू मेक इट डिफरेंट। बेसिकली एस्थेसिस फाउंडेशन हेल्प्स ब्लाइंड एंड लो विजन स्टूडेंट्स टू गेन इंडिपेंडेंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग, और पूरा होलिस्टिक ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। नहीं, वो ठीक है, वो तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे हम आएंगे। मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता था। Okay, I have a combination of 25 years of experience in corporate world, and I worked as an HR and admin head along with CSR initiatives. I've always worked with visually impaired. I used to be a reader, writer. I have done my integrated education with visually impaired, where I used to teach them braille, mobility orientation, and this was when I was in my college. That's the time I got very much inspired that I need to concentrate and focus little more, and maybe later in life I wanted to do something for the visually impaired. That's my key thing which I wanted to. And then later, of course, I got busy with corporate world. I was busy working, and then when I was working in one of the MNC companies, we discovered that, and which was a perfumery company. We wanted to do something where the management decided that we should get the visually impaired to recognize the smells and the fragrances, because they use their 4 senses much brighter than the sighted ones. So that's the reason this project came into being, where we had decided that we will have some program set, and there was a 2 years program planned for the visually impaired, especially in perfumery. And fortunately, I was the HR and admin that time, so I was instrumental in getting students, the research done with the experts, and then also I could manage to shortlist students. Or वैसे I learned visually impaired very closely, and also I learned that this was my passion earlier, and why it is coming back to me. So I was feeling, after doing a lot of introspection, I said there is a message coming from the universe that I need to focus more for the visually impaired students. So that's the reason I decided to start something for. अच्छा, 2 क्वेश्चन है, फिर मैं उर्वी जी के पास आता हूँ। एक तो आपने कहा कि कॉलेज टाइम पे ही आप राइटर रीडर बनती होती थी विजुअली इम्पेयर्ड की। ये आप बोल रही हैं लगभग 30-35 साल पहले, राइट? 25 साल तो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो गए। हाँ जी। तो उस टाइम पे मतलब कोई स्पेसिफिकली एनकाउंटर हुआ विजुअली इम्पेयर्ड से आपका, जहाँ स्कूल में आपको ब्लाइंड मिले जैसे, तो कैसे लगा कि आपको इस फील्ड में आना है, कि अब मेरे को करना है? दूसरा, आप कॉर्पोरेट में थे, यू वर डूइंग वेल देयर, आप एचआर थे, सीएसआर में भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो फिर सडनली मतलब जैसे आपने कहा कि शायद यूनिवर्स का ये था कि मुझे, मेरा पैशन है कि मेरे को वापस इस काम पे आना है,
तो मतलब कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ जिससे आपको लगा नहीं यार अब मुझे वहां से यहाँ आना चाहिए? नहीं, जब मैं कॉलेज में थी तभी मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद का कभी कुछ कर सकूंगी। पर लेकिन मेरे कॉलेज में मेरे साथ विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स पढ़ते थे, लेकिन उनको रीडर और राइटर ना मिलने के लिए उनको एग्जाम्स नहीं लिखने होता था, which I used to feel which is quite unfair because they were very bright students. We had 2 girls in our college. एंड फिर मैंने उनसे बात की और मुझे पता चला कि वो लोग कौन से ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, और थोड़ा मैंने उससे रिसर्च किया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड टू द इंस्टीट्यूट वेयर आई डिड माय ब्रेल एंड अदर इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग। उर्वी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में थोड़ा सा पहले हमें बताएं। मेरे बारे में बताना है तो this is Dr. Urvi Jangam. I have completed my PhD in German studies. I'm blind, by the way, completely blind, just for your information, except for light perception. So basically about me, I have completed my PhD in German studies, and that was in the year 2019. And in India, this has been like I didn't really have any guidance as my as I actually walked on this path, as I treaded this path, because इससे पहले किसी ने किया नहीं था इस फील्ड में, and German being a foreign language, it was pretty challenging to opt for the language first of all, क्योंकि resistance था from sighted counterparts की, not from the family of course, because they supported me in anything that I wanted to do. In fact, it's all that I owe it to them that I am the person I am today, to my parents. So but from the society how it is, अगर आपको नहीं पता है कि अगर कोई blind इंसान है जो कोई different field enter करना चाहता है, and especially you don't have an experience working with a blind individual, with a blind student. So that's how it all began, where the lecturer in the college, it was in the year 2004, in my junior college, when the lecturer told me, you cannot do this, you can't opt for German, you are blind, so maybe you should opt for a regional language. And that was the kind of a thing which spurred me to say that no, अब तो मुझे यही करना है, इन्हीं को नहीं पर पूरी दुनिया को बता देना है कि blindness is not a limitation and we can do anything if we want to. So that's how the journey started for me. And I completed my PhD from University of Mumbai in 2019. I was in Germany as a research scholar for the German Academic Exchange Service scholarship. It was for around total 6 years that I was there. And after my post my research, in the post research phase, basically, I realized that while I was trying to enter transition from academia to the professional world, I realized that there are really a lot of difficulties, and these difficulties can actually hamper someone with a disability. Not just I knew that I had I not just with your background, no wonder in which part of this world you are, you do face difficulties. There are huge gaps when it comes to integration into the corporate world or in whichever profession you desire, basically. And that's how the whole idea of the foundation, and luckily Rita is a friend, so we caught up again after around 25 years. So and basically my research is about aesthetics. It is basically about how do blind and visually impaired individuals perceive aesthetically. यदि आप blind या low vision है तो आप aesthetically या फिर आप easy terms में बोला जाए तो आप सौंदर्य किस तरह से महसूस करते हैं अपने 4 इंद्रियों से के माध्यम से. So that is what my PhD research has been about, and I was really thrilled कि अगर इसका कोई practical application हो, and that is how, as the journey for Aesthesis, with Aesthesis Foundation, and the idea took roots for me, and that is where it all began, I would say. Great. तो आप पहले 25 साल पहले एक दूसरे को जानते थे? हाँ जी. हाँ बिल्कुल. I was a kid. Sorry Rita, over to you. Yeah.
जैसे मैंने बोला कि मैं वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन मैंने सीखा था, हम लोग घर पे एंड स्कूल में सिखाते थे स्टूडेंट्स को, बच्चों को। बेसिकली आई हैड अराउंड 8 to 10 स्टूडेंट्स। उसमें से एक स्टूडेंट, वन ऑफ माय ब्राइट स्टूडेंट्स एक्चुअली वाज उर्वी जंगम, एंड आई एम सो प्राउड of her, because that's the time I know her and her family, and it was easy for us to be always associated with each other. मतलब instinct connection है। हम जब ऑफलाइन बात कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा, तो आपने बोला कि इसका, मैंने पूछा एस्थेसिस का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा परसेप्शन। तो ये फाउंडेशन का नाम आपने परसेप्शन क्यों नहीं रख दिया, यही क्यों रखा? व्हाट्स सो स्पेशल, मतलब क्या खास? So basically, हम हाईलाइट करना चाहते थे, जैसे मैंने आपसे कहा कि the whole idea that a visually impaired person can pursue with her four senses, and that is her or his strength, so to say. This we wanted to make not just a theoretical statement but a principle, a funda of our life. और मेरा तो ये मानना है कि this is the thing which I have been following, और इसीलिए, और ये सबके लिए उनके लाइफ का मंत्र हो बने, एंड दैट्स द रीजन वी डिसाइडेड। एंड हमारा जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग इज बेस्ड ऑन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फोर सेंसेस। लाइक इंस्टेड ऑफ लमेंटिंग द फैक्ट that oh my god, I've lost my visual sense, now what is going to happen to my life? Of course it is a grave loss, ये एक बहुत बहुत बड़ा लॉस है when you lose sight. I mean it is unparalleled, आप किसी चीज़ से कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। आपका यूनिवर्स बदल जाता है, चीज़ें बहुत बदल जाती है, आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है, मतलब। But that is not the end of this world. That's what we wanted to indicate, and basically so as a solution to all these hurdles, all these hindrances, I think there's a very simple yet profound answer to this question, and that is, अगर आप आपके चार इंद्रियों का इस्तेमाल एक ऑप्टिमम तरीके से कर सके, and that is what our whole training is centered around, and that's the reason we decided to name it Aesthesis Foundation for Visually Impaired. तो वन वर्ड मंत्र है, मतलब ऐसे जैसे आपने अपने लाइफ को जीना है तो आपकी वन वर्ड मंत्र आपने दिया है लोगों को, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से ही इंडिकेट मतलब आप उसको एक नटशेल में इतना वो नहीं कर सकते, बट यस ऑफ कोर्स दैट इज द लाइन ऑफ थॉट्स दैट वी have. Well, that tells a lot about your organization, right? One can guess from the title. Exactly, okay. Because yes, Rita. Yeah, that's exactly what we are trying to say. Yes, sight is very important, but in case now that we don't have it, we accept it, and blindness should not, constrain you from giving whatever best we can. So the same way, best दो और best हम लोग से training में लो भी. That's why we give all the different types of trainings to the students, so that they don't lag behind in anything. चलिए बताइए अपने ट्रेनिंग्स के बारे में, कौन सी ट्रेनिंग्स आपने शुरू की हैं, रीटा जी? हाँ जी, मैं आपको स्टार्टिंग में हम लोग जब ये करते हैं, स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन के लिए बोलते हैं, सो वी डू अ प्रॉपर केस स्टडी ऑफ ईच स्टूडेंट। उनके एलिजिबिलिटी के ऊपर हम लोग डिपेंड करता है। हमारा एक है कि 10th and 12th स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। फिर देन वी अंडरस्टैंड व्हेन वी स्पीक टू देम, वी डू अ प्रॉपर केस स्टडी, आवर टीम डज अ केस स्टडी, एंड देन वी सी व्हाट इज द एप्टीट्यूड of the child, how good they are, and whether they can cope up with the training what we are giving. So हमारा training fundamental course है 6 months का, then there is 1 year का diploma course, and then we have another one that is advanced diploma. So we have different things. In fundamental course we just see the basic things where we teach them English, communication, computers, yoga, and do a lot of counseling, because that's the time a student is ready to accept कि अभी वो life में और कुछ और भी बन सकता है. They should understand that they have got so many talents within them, and that will help them to become independent. About the diploma, Urvi will tell you more about it. तो बेसिकली आप अभी 5 चीजें सिखा रहे हैं, लैंग्वेज, इंग्लिश जिस भी आपने बात की, कंप्यूटर में आप बेसिक और एडवांस कोर्सेज करवा रहे हैं, योगा करवा रहे हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, और ये सारा आप कर रहे हैं ऑनलाइन।
जी बिल्कुल, हमारे कोर्सेज फिलहाल के लिए तो वर्चुअल है, क्योंकि आप तो जानते हैं पैंडेमिक की वजह से we all had to go virtual, and we didn't want to risk our students' lives by exposing them to any kind of transport or any kind of risk to the exposure to other individuals. नहीं, मेरे को ये समझना है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन पेंडेमिक पे टाइम पे कर रहे हैं, तो आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन क्यों? Absolutely, you hit the nail there. आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा. Thank you for that question. So basically, हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों? So the planning which goes into the whole training process, जैसे हमने कहा, Rita has mentioned already that this is a holistic training. आपको इतने सारे options, ठीक है, हमारा fundamental course जो है, you could say that there are many organizations across the country, fortunately, who cater to this need, because we have so many blind students and low vision students that we won't be able to alone cater to this need. So, but at the same time, हमारा organization जो है, we have qualified trainers in terms of, so for example, if we're talking about our language course, so one of our trainers, she's a PhD in linguistics. She holds a PhD in linguistics. And so, you know, the kind of training that's provided, or one of our trainers is into media, so, but someone who can understand how to interact with visually impaired individuals, and at the same time, her media exposure allows her to introduce a lot of digital media forms which are not explored with blind or low vision individuals. You know, people think that हाँ वीडियो में तो क्या समझ में आएगा, या फिर लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेडली सिखाने की क्या ज़रूरत है, ग्रामर्स के रूल समझा दिए, हो गया, डन. या फिर हमारी कंप्यूटर ट्रेनर जो है, शी इज़ डन हर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, हु इज़ हरसेल्फ अ लो विजन. दिस इज़ द की, यू नो, लाइक अगर आप खुद लो विजन है तो आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आपके स्टूडेंट की डिफिकल्टीज क्या है. तो मोटा मोटा आप कह रही हैं कि आपका जो स्टाफ है वो स्किल्ड है, तो वहाँ पे वो उनका स्किल सेट पूरा है, दे अंडरस्टैंड डिसेबिलिटी, दैट इज द व्हाई कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना चाहिए. सी दैट इज जस्ट वन ऑफ द रीजंस. ये फंडामेंटल कोर्स जो है, वहाँ पे बात खत्म नहीं होती है. जनरली होता क्या है कि पीपल ऑफर दी स्किल्स एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. We build on this fundamental course in order to take the students to prepare them for the next level, and that is where our diploma course comes into the picture. So this course is basically a vocational hands-on practical training course where you have introduction to actual practical subjects jinko at later stage of your life, once you're completely done with the training and you're ready for the external world, for the outside world, for the job professional world basically, you will not find difficulties entering it. So the kind of courses. जी मैं समझ गया आपकी बात को. तो रीटा जी, मतलब आप ये कोर्सेज के बाद आप कहती हैं कि आप उनको दूसरे लेवल तक तैयार करती हैं, तो क्या आप प्लेसमेंट में भी हेल्प करती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन? ये फर्स्ट 6 months में हम लोग उनको मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन भी सिखाते हैं. ओके, उसके साथ हम लोग, जैसे हमने बोला कि हम लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं. सो वी हैव वर्कशॉप्स. सिर्फ 6 months में ये बेसिक्स नहीं सिखाते, इसके साथ हम लोग वर्कशॉप्स रखते हैं जहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आके. ऑनलाइन मोबिलिटी कैसे सिखाते हैं आप? ओरिएंटेशन मोबिलिटी वो हम लोग ये पॉडकास्ट बना के, एंड देन वी हैव सर्टेन वीडियोस मेड उनको बताने में, और फिर हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो उनके साथ 1-to-1 करके उनको समझाते हैं कि कैसे ओरिएंटेशन और मोबिलिटी. माफ करना, मैं बीच में आप लोगों को इंटरप्ट कर रहा हूँ, साथ ताकि लिसनर्स का जो डाउट है वो साथ के साथ मैं क्लियर करता चलूं. हाँ, नो दैट्स परफेक्टली ऑलराइट. देखिए, आप कोर्स करवा रहे हैं ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड को, आप कह रहे हैं आप लोग वीडियो बनाते हैं. जो मोबिलिटी, जो मैं समझता हूँ, मोबिलिटी की ट्रेनिंग बड़ी स्पेसिफिक होती है. आपको बताना पड़ता है कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, कच्चे रोड पे कैसे चलना है, पक्के रोड पे कैसे चलना है, सीढ़ियों पे आपने कैसे चलना है. तो हाउ इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑनलाइन? So basically, we start with the basics. हमने हमारे हर एक student को we have ensured we have shipped a white cane to each one of them to begin with, so that they can use it while we teach them. तो जब आप सिर्फ वीडियोस बनाकर रुकते नहीं हैं, but after the videos we have practical sessions with each student जहाँ पे our trainers guide them through the whole step by step. आपने जैसे कहा कि अगर आपको stairs navigate करने हैं, या फिर
whenever you want to, obviously crossing the road is slightly dangerous, so that would be covered only in, you know, the whole diploma thing where things go a little hybrid, as we are तो okay to वीडियोस do वो it. अपने घर वालों को दिखा के भी पूछ सकते हैं कि मतलब हाँ जी, Yeah, and we like हम वन almost टू वन 30 ट्रेनिंग देते हैं आपको। session रखते हैं 1-to-1 with every student, so that we can run them through the whole फायदा हुआ process. किसी को अभी तक इससे? जी बिल्कुल, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप हमारी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, दैट इज www.aesthesis पे जाके आप देख हमारी स्टूडेंट स्टोरीज को पढ़ सकते हैं, जहाँ पे यू नो students have actually started believing in themselves, particularly those who have lost sight later in life. राइट। तो रीटा ये बताएं मुझे कि मैं पढ़ रहा था थोड़ा सा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वहाँ पे मेरे ये पढ़ने को मिला, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि रूरल एरिया में अभी भी एक डिवाइड है। तो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है अर्बन सेंट्रिक काम करती है, अर्बन में फिर भी काम हो रहा है, तो रूरल में नहीं है, तो आप वहाँ रीच बढ़ाना चाहते हैं। अगेन मेरा सवाल वही है कि ऑनलाइन क्या पॉसिबल है, क्योंकि रूरल एरिया में रीच करना, उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, कईयों के पास डिवाइसेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो आपके पास केसेस आए हैं रूरल एरिया से? स्टूडेंट्स डू अप्रोच अस फ्रॉम रूरल एरियाज। हम लोग क्योंकि हम लोग पैन इंडिया को अप्रोच कर रहे हैं, तो देर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच दे आस्क, और हमने अभी जो समझाया, जो 1-to-1 ट्रेनिंग होते हैं, उसमें हम लोग जैसे हम लोग वीडियो बताते हैं या स्टूडेंट हमारे ट्रेनर ने उनको समझाया है, तो उसके बाद वी एम्फसाइज ऑन प्रैक्टिकली देम प्रैक्टिसिंग एट होम, बिकॉज ये नहीं कि हमने बोला और हमारा काम हो गया। वी आर वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड। हम लोग ये देखते हैं कि उन लोग का इवैल्यूएशन, और हम लोग एवरी टाइमली उनको चेक करते हैं कि उसमें उनका क्या प्रोग्रेस हो रहा है। तो हम लोग ने, जैसे उर्वी ने बताया, कि सिर्फ स्टूडेंट स्टोरीज ही नहीं, उनके फैमिली से भी उनका प्रोग्रेस आया है कि हाउ वेल एंड हाउ कॉन्फिडेंट दे आर बिकम आफ्टर डूइंग दिस 6 months। तो जहाँ रूरल का कंसर्न है, हमने उनको ये भी बोला है कि यस, इफ दे आर रेडी टू कम टू मुंबई, we will speak to the places where accommodation facilities, और उनको हम लोग assist कर सकते हैं, as in उनको सिर्फ guide करके, उनका staying and all they will need to do themselves. Right. In the sense that obviously donors can be found, sponsors can be found. In that sense, that is what Rita means. And we will obviously, the students are not left on their own. We will be there with them. It's just that it's a tricky situation post-pandemic. That's. तो ऑफलाइन एक्सपेंड करने के कुछ प्लान है आप लोगों के? Exactly. That is what Rita has been talking about. कि हम offline, we have to go hybrid now, and that would be our next step. कि हम जो डिप्लोमा कोर्स है वो तो वैसे भी हाइब्रिड होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है जो ऐसे ऑनलाइन एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। सो वो सब ट्रेनिंग हमारे वर्कशॉप्स पे ही होंगे, तो उसमें तो इट विल बी ऑल ऑफलाइन, वर्कशॉप्स विल बी ऑल ऑफलाइन, ताकि उनको वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि उन लोग दे आर केपेबल टू टेक समथिंग इन द मेन स्ट्रीम लेटर। राइट। नहीं, ऑफलाइन वर्कशॉप्स तो ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ आने वाले टाइम पे क्या एक्सपेंड करेंगे, ऑफलाइन सेटअप होगा, या ऑफलाइन ट्रेनिंग के बारे में भी आप लोग सोच रहे हैं, या अभी आप ऑनलाइन ही एक्सपेंड कर रहे हैं? नहीं, ऑफ कोर्स डिप्लोमा में हम लोग ऑफलाइन वर्कशॉप्स ही प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे वी विल बी टेकिंग देम टू डिफरेंट फील्ड ट्रिप्स, ताकि स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस मिले कि उन लोग दूसरी इंडस्ट्रीज में जाके, दूसरी जगह पे जाके, दे विल गेट द कॉन्फिडेंस टू वर्क इन मेन स्ट्रीम। और इवन इफ दे वांट टू डू इंडिपेंडेंटली कुछ, मे बी किसी को काम नहीं चाहिए, उन लोग को खुद का कुछ करना है और बिकम एन एंटरप्रेन्योर, they should be having that confidence and know what is available in the market. Right. तो अच्छा, एक दिक्कत और excuse me, I'm interrupting you. Yeah. So they should have the required tools at hand to be able to enter the market. जैसे मैंने कहा, बहुत सारे gaps होते हैं. If you as a blind or a low vision individual decide to enter the market, आप sighted individual की तरह आज decide किया तो आप कल market में नहीं उतर सकते. So that is the kind of holistic training that we provide. और हमारे courses जो हैं वो भी exclusive हैं. We do provide things like tea and coffee tasting, foreign language training, perfumery, and
of course advanced versions of the basic courses that we have taught, so that उसका actual फायदा हो लोगों को, वो theory बन के ना रह जाए आपका जो knowledge है. That's the reason these practical workshops are required, to measure your own performance, to actually know out there कि difficulties क्या होती है, to actually experience and learn from someone who is a corporate trainer herself or himself. क्योंकि वरना तो आप अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में हैरी पॉटर वर्ल्ड तो हम सब बना सकते हैं, बट when you actually get to work out there, what are the difficulties and how do you overcome them, how do you find solution to each and every problem which you would encounter and would face as a blind or a visually challenged individual. Right. तो एक चीज मुझे जाननी है, क्योंकि आप ऑनलाइन ये रन कर रहे हैं, तो बहुत सारे केसेस, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को सिखाती हैं, और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो लेट ब्लाइंड होते हैं, जो 30 साल 40 साल में, और वो भी शुरू करना चाहते हैं, तो उन्होंने उनकी स्टडी में गैप आया होता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग्स, तो उनके लिए भी कुछ है जो आपका सिर्फ स्टूडेंट्स ओरिएंटेड है? So basically, जैसे रीटा ने कहा था शुरुआत में कि हमारा जो एज ग्रुप है वो 16 to 30 प्लस है. So but we can make exceptions to the rules. अगर 30 प्लस तो फिर सब हो गया ना, जब सिर्फ 30 तक है. 16 to 30 है, जो 30 प्लस बोल रहे हो ना? ओके. हाँ, हमने ओपन, मैंने कहा ना आपसे, हमने ओपन रखा है 30 प्लस, so that the students get the so that हमारे जो students हैं, individuals get the opportunity to actually to grow, to learn something. But होता क्या है, at the same time we are very selective about our process, क्योंकि जो elder जो 30 plus individuals होते हैं, उनमें से कुछ बहुत seasoned होते हैं, and people are not open to change after a certain age. Of course, there are exceptions to this rule, and we are more than happy to take them. But we have to be really careful while screening our students. That is definitely a criteria. Okay. तो अभी तक कितने कोर्सेज आपके, कितने बैचेस हो चुके हैं एक साल में, रीटा जी? हाँ, हमारा अभी ऑलरेडी 6 months का बैच वी हैव फिनिश्ड इन दिसंबर एंड, एंड अभी डिप्लोमा और सेकंड फंडामेंटल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशंस ऑन है. कैसे नेटवर्किंग आप करते हैं, कैसे, हाउ डू यू अप्रोच टू पीपल? We are getting very good response from students all over. In fact, good response from Pan India more than getting only from Mumbai. हम लोग, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स बहुत स्ट्रांग है, हम लोग एडवर्टाइज करते रहते हैं. सब विजुअली इम्पेयर्ड ग्रुप्स जो होते हैं उसमें हमारे कोऑर्डिनेटर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उनको करते हैं, और जो भी विजुअली इम्पेयर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है उनको भी हमने अप्रोच किया है. कॉलेजेस में जहाँ पे विजुअली इम्पेयर पढ़ते हैं वहाँ पे इन्फॉर्म किया है. सो हमारी तरफ से वी आर ओपन टू एनीवन एंड एवरीवन. ऐसे नहीं है कि हम लोग सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स को ही लेंगे. सो इफ दे आर कमिंग इनटू आवर एलिजिबिलिटी, और जब हम लोग का टेस्ट होता है, व्हेन वी टेक एन इंटरव्यू, वी हैव टू सी दैट द बेसिक रिक्वायरमेंट इज कंप्लीटेड, बिकॉज अगर वो नहीं है तो we won't be able to, और अगर वो मल्टीपल हैंडीकैप है तो भी we will be very selective. It's because we don't want that child or the student to suffer when the other children are going little faster. So we have a proper screening there. People with multiple disabilities. In fact, we have had a student, ऐसा एक केस हमारे पास आया हुआ था right in our first batch, but fortunately we could handle it properly, and the student is very happy with the outcome of the course. But अभी तो आप ब्लाइंड और लो विजन को सिखा रहे हैं ना, जहाँ ये कोर्सेज सभी के लिए हैं. हाँ, पर you have someone who is blind who has a learning disability, for example. तो अगर वो क्वालिफाई होता है इंसान, तो आप इसको डिस्क्रिमिनेट तो नहीं करना चाहेंगे ना. आप ये नहीं कहेंगे कि भाई आपको मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो सॉरी नो थैंक यू. ऐसे तो हम नहीं कर सकते. No, I'm just understanding, क्योंकि जो लिसनर सुन रहे हैं उनको मैसेज पता लगना चाहिए ना कि आप किस को लेते हो. बिल्कुल, यही इसलिए तो मैं कह रही हूँ आपसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मीट करता है वो स्टूडेंट या करती है, तभी he or she can enter our foundation. Like उनकी लैंग्वेज स्किल्स बेसिक अच्छी होनी चाहिए, in the sense that they should be at least able to articulate, to speak for themselves, and उनके खुद के opinions हैं जो आप बाकी refinement हो सकती हैं. हम we all learn along the way.
that is we all do. I mean that's valid, applicable for all of us. So वो सब तो हो जाएगा, बट वो सीखने की चाह जो है, या आपको कुछ बनने की चाह है, आपको हर दिन जो आपका आता है उसमें मैं कुछ नया कर दिखाऊं, ये जो चाहत है और अरमा है, वो पूरे होने चाहिए. और कि यदि मुझे अगर लाइफ में कुछ करना है तो हर दिन मेरे लिए कुछ नया लेकर आता है, ये उम्मीद जो है वो बरकरार जिसमें होती है, only that individual can make a difference. So and basically your capacity and willing power to work hard. आप तो जानते हैं हार्ड वर्क के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस का कोई सब्स्टिट्यूट, कोई शॉर्टकट फॉर्मूला, मैजिक फॉर्मूला तो है नहीं. And what do you expect from the community or society? They need to get involved or simply participate with us, basically. This is an NGO, of course. Agar funds ke through nahi ho sakta hai, then they can give us places for workshops. अगर interested है तो we can get trainers, अगर कोई trainer background से है, but we need to have qualified trainers, okay? And there are different avenues. If there are just youngsters and teenagers, like हम लोग ने एक social outreach program किया है college, St. Andrews College के साथ, where these students just came and they helped them in each subject. So they were more like buddies to them, और जो भी उनको difficulties होती है उसके थ्रू उन लोग एक दूसरे से सीखे, and they really learned faster. In fact, the visually challenged students which we had, they told us, like, we felt so nice because अभी तक हमारे पास ऐसे friends नहीं थे. So it was nice, and we were very happy that we introduced something like that. So people can get involved in different ways. There are different avenues they can be with us, or they can just be a part of our social media handles by sharing it with two people. So by spreading awareness, they can be a part of us. So there are different avenues. That's what I would like to say. तो हमारी टारगेटेड ऑडियंस पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, उनसे कुछ कहना चाहें आप? Urvi? I would say that disability is a challenge, but please don't let it be your barrier. Like for me, my disability has been my driving force, and I would just pass it on. It could be for everyone, and agar aap chahe to nothing is impossible for you. And I'm not saying this in an idealistic fashion, in an idealistic tone. This is practically feasibly possible if you really believe in yourself and you believe in your dreams. अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव से कम्युनिटी से कुछ कहना चाहती हैं आप? I would say we'll need your continuous support to enable us to work towards changing attitudes, because disability के through public को एक set attitude होता है. So we'll need your support to help us in this, and help us in our attempt to share the voices to people with disabilities that enable them to participate in the society on an equal footing. They should get equal opportunities. So we are a part of inclusion. मुझे शॉर्टली एक बार फिर से हमारे लिसनर्स को, जितने भी कोर्सेज आप रन कर रहे हैं, शॉर्टली स्वीटली उसे आप बताएं किस कोर्स में क्या क्या है उनके लिए. So basically, जैसे हमने कहा, fundamentals में you will have all the basic aspects covered, be it English language skills, soft skills, personality development, computer training, orientation and mobility. Counseling is a very important aspect, जैसे रीटा ने कहा पहले, क्योंकि acceptance of your disability और आपकी जो feelings है, अगर आपको like if you don't encounter them, अगर आप हमेशा suppress करते रहें और कहते रहें, तो ये सारा एक ही डिप्लोमा के अंदर है, राइट? सर्टिफिकेट कोर्स है. दिस इज द फंडामेंटल कोर्स. बिल्कुल. तो फंडामेंटल कोर्स के अंदर आप ये सब सिखाते हैं? जी बिल्कुल. Okay. और ये 6 months का कोर्स है, और इस कोर्स के बाद जब आप ये कंप्लीट करते हैं, then you qualified, and if you obviously there's a next round of interviews, and if you qualify those, then you're eligible for our next course, which is the diploma course, which is for 1 year, जो 1 साल का कोर्स है. और इस कोर्स के दौरान आपको hands on practical चीजें सिखाई जाती हैं, which is a major change.
और इस कोर्स के दौरान आपको फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन मिलता है, जैसे कि टी कॉफ़ी टेस्टिंग है, देन वी हैव जर्मन एज अ फॉरेन लैंग्वेज, वी हैव अदर फॉरेन लैंग्वेजेस एज वेल, एंड प्लस वी हैव एडवांस्ड कोर्सेज जो आपने बेसिक कोर्सेज किए अभी, लैंग्वेज है या कंप्यूटर है, और ओरिएंटेशन मोबिलिटी जैसे आपने कहा ये लाइक ऑफलाइन होना कितना ज़रूरी है, तो दैट इज़ वन एस्पेक्ट विच वी कवर इन दिस कोर्स. सो हियर वी वुड बी गोइंग हाइब्रिड, और यहाँ पे ऑफलाइन वर्कशॉप्स एक्चुअली होंगे जहाँ पे प्रोफेशनल्स विल हेल्प स्टूडेंट्स नेविगेट थ्रू देयर स्किल्स टू एक्चुअली एनहांस देयर स्किल्स. तो बेसिकली 2 कोर्सेज आप रन कर रहे हो अभी, एक फंडामेंटल और एक डिप्लोमा. जी right? बिल्कुल. और इसके बाद जो है वो एडवांस डिप्लोमा कोर्स है जो विच वुड बी लाइक द नेक्स्ट कोर्स, और वहाँ पे वी वुड बी हैविंग अनदर सेट ऑफ कोर्सेज, बट वो अब तक लॉन्च नहीं हुआ है ऑफ कोर्स. राइट. तो बेसिकली लिसनर्स 2 कोर्सेज हैं. एक फंडामेंटल कोर्स है जिसके अंदर आपको तमाम चीजें सिखाई जाएगी, चाहे वो मोबिलिटी ओरिएंटेशन हो, कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो. और दूसरा कोर्स जो है वो डिप्लोमा कोर्सेज है. अगेन उसमें आपको प्रॉपर मल्टीपल चीजें सिखाई जाएंगी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो कोर्स में होगी. जो वेबसाइट का एड्रेस आपको दे दिया गया है उसमें जाके आप पढ़ सकते हैं. रीटा जी, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में? कोई चैलेंज है आपके सामने अभी? हाँ, challenges तो I mean आते रहते हैं. We would encourage more and more students to come forward and take advantage of this courses, because हम लोग ने स्पेसिफिकली ये पूरा सिलेबस हम लोग ने कस्टमाइज किया है ताकि हमारे उर्वी और मेरे जो एक्सपीरियंस है हमने देखा है जो विजुअली इम्पेयर्ड को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, स्पेशली इन मेन स्ट्रीम. Those things we have introduced. We also teach them telesales, marketing, product training in diploma, ताकि उन लोग खुद के बारे में they are more open to do communication. They are more open to even in their regional language. जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बात करो. आप अपने गांव में रह सकते हो and you can still do very well. ये हमारे पास जो टैबू है ना कि बॉम्बे वाले ही ठीक से करते हैं अच्छी तरह, ऐसे कुछ नहीं है. We will give you all the training so that in whichever place, भले आप पंजाब से हो या कोई भी जगह से हो, कोई भी तो that's why we are open to Pan India. I would welcome, and Aesthesis Foundation is for all the visually impaired students. All you have to do is be eligible to our requirement, and we will be giving you the training. So that is a major thing which I feel like I want Radio Udaan to be a voice to all the visually impaired student of 16 to 35 age group, so that they can come forward and join our organization and see the difference for themselves. बिल्कुल हम कंट्रीब्यूट करेंगे और जितना हमसे हो सकेगा हम इसको प्रमोट करेंगे. और लिसनर्स, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, प्रोजेक्ट्स आते हैं, अब उसको सफल बनाना आपकी जिम्मेवारी होती है. अगर आप आगे नहीं आओगे तो फिर कोई आपके लिए प्रोजेक्ट्स नहीं लाएगा. तो जो भी आपके लिए है उसका एडवांटेज लीजिए. तो आपके कोर्सेज पेड हैं या फ्री हैं? हमारा फंडामेंटल कोर्स जो है द बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स, दैट्स फॉर फ्री, बट द डिप्लोमा कोर्स इज वी डू इनकर, क्योंकि कॉस्ट जो है वो हाई है इस कोर्स के, so we cannot really risk the fact that that is impossible to give it for free. So we would encourage donors to come forward to actually sponsor the students, क्योंकि काफ़ी students से मुमकिन नहीं होता, family situations difficult होती है जहाँ से आप पैसे these are not huge amounts, but still to raise even that amount can be difficult, and we are aware of that. So we would encourage students to get donors for themselves, or we will try to get donors for them who would cover the amount for each individual for the diploma course. Right. And that could be ranging from that anyways is something that we could figure out. Yeah, and we would encourage companies who are listening to this, to come forward, collaborate with us. You can make a difference in this children's life. Because, as Urvi mentioned, for diploma course, there is a lot of, cost where their accommodation is concerned.
for their workshop things are concerned, or the trainer cost is concerned, if those things are taken care by the donors, then most of the students are from lower social economic background. It would be of great help, and tomorrow they will be somewhere just because you can do a little more for them. तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे लिसनर्स आपसे? You can reach us on our website. हमारे वेबसाइट में सब डिटेल्स दिया हुआ है. वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए अलग से ये है कॉलम है, वहाँ पे ईमेल आईडी है, वहाँ से लिख सकते हैं, या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से उन लोग हमको रीच कर सकते हैं. Where companies are concerned, they can reach us directly, as every little contribution will count for the student and for the growth of the foundation. एक बार अपनी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर अगर शेयर कर दें तो दैट वुड एक्चुअली आप कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा प्लीज. द ईमेल आईडी इज admin ADMIN @AESTHESISFOUNDATION.org. That is the email ID. Aesthesis Foundation, they can reach directly on 917045902280. I repeat, 917045902280. थैंक यू सो मच रीता जी और उर्वी जी, हमें ज्वाइन करने के लिए, अपनी फाउंडेशन के बारे में बताने के लिए. मजा है आपसे बात करके, और उम्मीद है कि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होंगी और आप इस कम्युनिटी के लिए जो एम्पावरमेंट का काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगा और आपको कम्युनिटी और सोसाइटी का पूरा सहयोग मिलेगा. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. Thank you so much for this wonderful evening, Danish. Thank you for this opportunity. Thank you, Danish. You're doing a wonderful job, and thank you to all the listeners of Radio Udaan. I'm sure we're going to get a great response from all of y'all, and we wish y'all all the very best. Thank you. Exactly. The world is your playground, so please do come forward and join us. Thank you. दोस्तों, आज हमने बात की रीटा जी और उर्वी जी से. उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर की, तो आप उनसे जुड़िए. जिसको भी जरूरत है उस तक इस जानकारी को पहुंचाएं. और इसी तरह सुनते रहिए रेडियो उड़ान. अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और टॉपिक पर, किसी और मेहमान के साथ. सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. बाय बाय.